യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടെപ്പോഴോ കണ്ടു മറന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനെടുത്ത് നാദാ നീ വരും കാലച്ചെക്ക് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നാണ് ശരിക്കും കാണുന്നത്. ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് अब अभी अभी नहा के शायद सामान सब उठा के वॉकिंग इनटू अ हाउस ആ വീഡിയോ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ, ലൈക്ക് മൈ പേരൻസ്, മൈ എൽഡേഴ്സ്, എവ്രിവൺസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓ യു ആർ ഡൂയിങ് എ മൂവി വിത്ത് സരീന വഹാബ്, ഓ മൈ ഗॉड शी इज सो ब्यूटीफुल बैक इन द डे. सो गाना गाओ ना मेरे साथ आप दो लाइन. गाना नहीं मेरे. हाँ तो आप गाएंगे मलयालम में? हाँ बिल्कुल. मुझे एक ही लेना आएगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, एक ही लेना आता है. हाँ ठीक है. नाधा नी वरुम कालचकेकुम कादोकु न्यानिरन्यो. उसके बाद नहीं आता मुझे. ഈ ലൈനിന്റെ മീനിങ് അറിയാവോ? नाधा मतलब वो प्रिया, नी वरु मतलब तुम आ रहे हो, कालचकेकुम तुम्हारे पैरों की आहट सुनाई दे रही है. राइट राइट परफेक्ट. I mean, it's a beautiful language. I really regret मैंने क्यों नहीं सीखा. I was so bad, you know. Even those days I used to be busy in Bombay also. यहाँ shooting खत्म होते ही I used to run. Okay. Actually, I really regret till today. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഇത് മനസ്സിലായി. മലയാളം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നോ എപ്പോഴെങ്കിലും? മലയാളം പഠിക്കാൻ मतलब पढ़ने में या बोलने में सीखने के कोशिश किया आपने? नहीं किया ना, that's a problem actually. I didn't. It was my mistake. पूरा इसका blame मैं अपने सर पे लूंगी. वैसे आपका मदर टंग क्या है? तेलुगु, because I am from Andhra. Okay. So तेलुगु से मलयालम कितना अलग लगता है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है. नेले पुमला ताड़े तेनेला उतना डिफरेंस है. ये सब कहाँ से सीखा? ये तो मेरे फिल्म का गाना है ना, बदलौन सॉन्ग का. ने पुमला. तो जब आप मलयालम में वैसे डायलॉग्स का तो मतलब समझना ही पड़ता है. Yeah, we have to write, we have to mug it, we have to understand it. The meaning of it. Long procedure. जब गाने करते हैं, क्योंकि your songs are also very popular. Yeah. तो ये गानों का जो लिरिक्स का मतलब है वो भी समझते हैं आप? हाँ हाँ, क्योंकि जब करने से पहले मैं एक एक वर्ड का मैं एक असिस्टेंट बैठो मेरे साथ. I never used to leave my assistant. बैठो और इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ. And very patiently they used to explain to me each and everything. So मेरा इसका श्रेय तो मैं अपने असिस्टेंट को ही दूंगी. जो मंसूर में भी बहुत देखा था मैंने. हाँ I know. आपने देखा ना? ऐसे मंसूर आपको शायद पता नहीं चलेगा. मंसूर में देख के मुझे आप डिसअपॉइंट हो गए होंगे. अरे हमने जरीना के बारे में कितना सोच के आया, ये ऐसे लाइन्स बोलती है. नहीं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था. नहीं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ था. लेकिन मुझे बस लगा था कि यार इतनी सारी मलयालम मूवीज तो की है इन्होंने, शायद पूरा समझ आता है इनको. शायद ये सब एक नाटक है. क्योंकि നമ്മള് മൻസൂറിന്റെ ഷൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും യു യൂസ് ടു ഗോ സിറ്റ് ഇൻ വൺ കോർണർ ആൻഡ് യു വുഡന്റ് റിയലി ടോക്ക് ടു എനിവൺ അൺലെസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് യു വുഡന്റ് ടോക്ക് ടു എനിവൺ അൺലെസ് someone came and spoke to you. So all of those days I used to sit there and wonder, yaar, I think she actually understands Malayalam really well. No, I do understand but not fully. If you speak fast, I can't. Okay. Slowly. And I used to think you were just sitting there watching everyone but not saying anything because you have the license. No, I like to watch people. मैं सबको watch करती हूँ. कौन किसका कैरेक्टर कब काम आ जाए कोई फिल्म में यूज करने के लिए. You know, I do watch. तो मंसूर में कैसा लगा आपको? मतलब मंसूर आपको शायद पता नहीं चला होगा क्योंकि with respect to Malayalam films, Mansoor has written a little more poetically than films usually are. Yes, many. The language is, every character is very articulate. They have all the words that they need in their vocabulary to express exactly how they are feeling. Yes. तो आपको मंसूर के डायलॉग सीखने के टाइम कैसा लगा था? वापस काफी टाइम बाद लास्ट मलयालम फिल्म शायद आधा मिनट मगनबू. नहीं इसके बाद एक और किया. चलो जो भी एक किया. 1-2 साल तो हुआ ही होगा. हाँ गैप तो है. तो मंसूर के डायलॉग्स के बारे में क्या लगा आपको? नहीं कुछ मंसूर मतलब मुझे पता है क्योंकि वो आप लाइन पहले पूरा मतलब समझ लो, एक एक लाइन का वर्ड समझ लो, देन यू मग इट. और बीच में समझ में नहीं आया तो दे help you. Okay. So it's like that. वो this I have been doing since mother or some days.
You know, let me tell you one thing. Madhunasam, when first that time Gemini Studio was there. It was Madras. Yeah. तो लाइन्स मेरे पास आए, मैंने देख के आई स्टार्टेड क्राइंग. आई रिफ्यूज टू कम आउट ऑफ द रूम. आई सेड नो 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 नो, मुझे वापस जाना है बाबा, इनका साइनिंग अमाउंट लो और मेरी जान छोड़ो, मेरे को जाने का है. तो कमल हासन केम टू माय रूम. व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू द सेट? आई सेड कमल, आई डोंट नो हाउ टू से. आई एम रीडिंग इट genuinely, seriously. I was reading from the beginning till the end. By the time I go up, again I'm forgetting. I said no, I can't. Then he said, since you are here, you work one day. Okay. We all will help you. Okay. If you feel कि you can't do it, we will not force you. Okay. अच्छा रो. Then I went. They helped me and I mugged it. If I forget, they just prompt. Anyway, they said, don't worry, they are going to dub your voice. Okay. So I said, okay. First day I said, yeah, not bad, I can do it. Like that till my journey till today. It's going on like mother or some days. Right. But I never put my effort to learn the language. That was my biggest mistake. But for someone who doesn't actually know a language which is as difficult as Malayalam, you've been doing a great job of making people believe that you actually know what you're saying. Yeah, exactly. Many people think that I'm a Malayali and I speak fluent. Even today when I was at the airport, I was taking Cochin flight. Then one fellow came and he started talking to me in Malayalam. I was just looking at him. I smiled at him. Which is great. I mean, yeah, I'm happy. I've also seen a lot of, I've seen a lot of Malayalam movies and Tamil movies also. I think I cover my mistakes with my expressions. Yeah, I think that's what you do as that's what. Which is great. Because usually we can tell, it's not very difficult to tell when a character doesn't know the language that she's delivering the dialogues. Yeah. When you watch a movie and like first or second close shot, you can pretty much make out. Acha no, ye to tukka maar rahi hai, isko actually pata nahi. But it's not that easy with you to tell. When I watch your films and I've seen a few clippings, I've seen Mansoor obviously. It doesn't look like you don't know the language, which is great. Yeah, that's nice.